cameras and their mics, you note down their names. Yes, sir. There is a disturbance. I find there is a disturbance. Ask them to mute. Ma'am, mute your audio. Jashi ma'am, please mute your audio. Who is there? Jashi ma'am, please mute your audio. Is my microphone is muted? No, it hasn't been. Jashi ma'am, please mute your audio. Yes. Okay, first war of Indian independence, 1857. So what is this first war of Indian independence? First, you try to understand what is independence. As we were ruled by the Britishers, we were trying to get freedom from their clutches. So we were in need of leaders who lead us. Unless any leader represents us, we cannot fight against one system. Fighting against British system means you should have one big organization. You should have the cooperation of people, and that cooperation of people should be led by one eminent personality. We need leaders to lead. Anyhow, this was already people were angry against East India Company. People were angry against English, and in the minds of people, they were ready to sacrifice their wealth, their health, their soul for the sake of independence. So that's why these energies should be utilized in proper way to get freedom. So this we saw in 1857. So here two different opinions we find regarding this particular revolt. So what are those? Indian historians, they call it as a first war of Indian independence. But Europeans, they were calling it as what? Sipahi mutiny. Sipahi mutiny. This is the contradiction between European historians and Indian historians. What was the contradiction? The contradiction, once again, let me repeat you. I will ask them. What is the contradiction? What they contradict? The European, the British writers, British historians, they call it as a Sipahi mutiny. M-U-T-I-N-Y, Sipahi mutiny. Whereas Indian historians, they call it as a first war of Indian independence. So here, why is this contradiction? This contradiction, what happens is, revolution is having its own characteristic features. Revolution does not stop. Once it starts with a very small point, but entire world comes under its influence. That is revolution. It is a very big change. Every aspect, even the minor things will also be changed. Right from micro things to macro things are changed in revolution. It is spread throughout in nook corner of the country. That's called revolution. So mutiny means what? It is limited to only one place. It does not spread. You see, it does not spread. For example, this first war of Indian independence, it was limited only to northern part of India. It wasn't spread to southern part of India. And in northern part of India,
there were a few pockets, there were a few states, and it was limited in those states only. For example, it was limited in Uttar Pradesh, and it was limited in whatever West Bengal. Only few states were under the influence of this particular mutiny. So that's why we don't call it as a revolution. As the revolution took place against the Britishers in the year 1945-46, and we got independence. In everywhere, in every part of the country, we saw what opposition against what Britishers. That is revolution. And what ideals we were adopted during those times, now also we are following those ideals in our day-to-day life. We respect our flag, we respect our national anthem, we respect khadi, we respect Swadeshi goods, we respect what you call we respect our foreign policy. We have adopted our own foreign policy, which teaches us that maintaining very cordial, very amiable, very friendly relationship with our neighbors. All this we were adopted during what freedom struggle. Those ideas we respect now also. This is called revolution. So the effect we get from the revolution, they are everlasting. Throughout our life, we fight. But mutiny's effect very limited. It limits only in just one corner, in one pocket of the country. That's why our own rulers like Sikhs, and there were few other rulers. They were supporting English people. They were supporting Britishers. That's why we historians are not we historians. They don't call it as a revolution. Few historians, they think it was just a simple mutiny, that the Indian soldiers who were there in the East India Company, they raised their voice against East India Company because they were facing many problems. By that time, in East India Company had its own army. In that army, 240,000 soldiers were there. Out of 240,000 soldiers, 2 lakhs were Indians, 40,000 were Britishers. This superiority of number, that 2 lakh Indians, gave the confidence to the soldiers that they can revolt against the English, which was proved to be failure. Okay, so here, doctrine of lapse, subsidiary alliance, through these two policies, Britishers were very successfully, they acquired entire India. Okay, and even they were successful in capturing South Indian states. Everywhere Britishers were there. So then, what happens is, we have to look into few causes why that revolt was erupted. What are those causes? First cause was political cause, second was economical cause, and third was, that is, administrative reasons, military reasons. Then how it is spread throughout country. It wasn't spread throughout country, but in northern part of India. And why that revolt was failed, you have to study. Results of the mutiny. In this scenario, you have to read. So first, political cause. What was the political cause? Can you tell me? Only 2 policies were there. Which one policies? The policy of Lord Dalhousie. What was the policy of Lord Doctrine Dalhousie? of lapse and subsidiary lines. Doctrine of lapse and subsidiary alliance. Subsidiary alliance and doctrine of lapse. Okay. Through these policies, Britishers very successfully they acquired states under their control, provinces under their control. That angered few of our kings and queens who fought against them. Okay, then that was the, for example, here he has given here Satara, Jaipur, Jhansi, Udaipur, and many other states became part of the British Empire. It was annexed through the subsidiary alliance. Dalhousie abolished the kingship of Tanjore and Carnatic. In Carnatics, there were wars were fought. 3 wars were fought, and through those 3 wars, entire Carnatic was captured,
which wars were fought? Can you tell me in Carnatic region? Which wars were fought? Carnatic wars. Carnatic wars. Carnatic War 1. Carnatic War. Carnatic War 1. How many wars were fought? 3, sir. Three wars. Which were they? Carnatic War 1, Carnatic War 2, and Carnatic First War. Carnatic War, First second Carnatic War, Carnatic third Carnatic War. Carnatic 1, 2, 3 wars were fought. Yeah. Yes, Okay? sir. Through those wars, entire Carnatic was captured by Britishers. Okay, so then economic reason. What was the economic reason? By that time, Europe was industrially developed. Industrial revolution took place in Europe. And its bad effects we saw in India. Not only in India, wherever these Britishers they had their colonies, in all those colonies, we find the bad effects of industrial revolution. What happened in industrial revolution? Entire Europe was industrialized, and Europeans were in need of few things. First thing, they were in need of raw materials to their industry. As Europe is very small continent, as Europe is one of the very congested continent, it lacks natural resources as Asia. That's why if everyone was manufacturer, but they were not getting enough supply of raw materials, that's why they pay their concentration towards what? Other continents. Then here they send their people in the name of trade, to Asia, because Asia was very big continent. Asia was technically, scientifically, and technically very backward and highly populated. So the requirements which they were in need, all those requirements were fulfilled in Asia. Asia was fit to supply laborers to their industry. Asia was fit to supply raw materials to their industry. Asia was ready to give market for their products. Can you tell me what is market for their products? What do you mean by market for their products? Yes. What do you mean by market? Market. Giving market means what? Don't know. Transportation. Selling products to customers. Giving business. We were ready to buy new things. We were giving them businesses. We began to neglect our own handmade things because our own handmade things weren't able to compete with the foreign goods, because foreign goods were very beautiful, durable, cheap in rate, and well finished. Take the example of clothes. Indian clothes were hand woven. Foreign clothes were what? Woven in industry. They were of very far superior quality than the Indian fabrics. That's why our textile industry had very bad repercussions, very bad impact. So when the industrial revolution came in Europe, here in India, textile industry completely ruined. Ruined means what? Completely ruined. Completely. Can you give me another word for ruined? Completely. Yes. Destroyed. Our artisans, our laborers, our weavers, they lost their job. Our potters, you know potters, not Harry Potter. Don't think Harry Potter. Potter means who? Who are potter? Who are potter?
Potters means One who make pots. one who makes pots, earthen materials. What? Earthen Earthen materials. materials. Once upon a time, these things were in high demand in Europe. Unfortunately, after Industrial Revolution, the demand was sharply fallen. That's why potter lost their jobs. Many billions of Indians become jobless. They went back to their villages and asked their father their share in the property. Hence, the division of land takes place. The division of land, in turn, it has a very adverse effect on production of crops, and it has adverse effect on people's daily life. Once there was 20 years famine in India. You know famine means what? 20 years. Famine means what? Famine means drought, acute shortage of foodstuffs, acute shortage of foodstuffs. That's why India suffered a lot because of the Industrial Revolution. So here, the Britishers began to levy means imposing high custom taxes on Indian goods in their countries, in foreign countries like in England, etc. Indians, those who want to sell their products in Europe, they have to pay high custom duty. Then zamindari system, like farmers were exploited. Zamindari system like a permanent settlement system, rayatwari system, and then one more. Can you tell me? Yes. How many taxing systems were introduced by the East India Company or Britishers? Malwari system, sir. Malwari system, sir. Malwari system, sir. You repeat all three taxing systems. Zamindar system, Permanent zamindari system, Permanent zamindari system, Raitwari system, Permanent and Malwari zamindari system, system. Malwari system. Malwari system. Okay. So, reasons for the bad economy of India, first was Industrial Revolution, then these taxing systems. Okay. Then zamindars and talukadars and mahaldars were given rights to collect taxes, right to collect taxes. That's why that had a very bad impact on Indian economy. Very bad impact on Indian economy. Okay. So then, farmers were forced to grow the crops which was benefiting to Britishers. For example, farmers were forced to grow indigo. Farmers were forced to grow neem. These were narcotic crops, which was benefiting to the what? English people. So that also had a very bad impact on our economy. Next, administrative reason. What were the administrative reasons? That is, yeah, Britishers introduced many civil and criminal laws. What do you mean by civil laws? Civil laws means Britishers introduced many civil and criminal laws. Civil laws means what? Don't know? Am I audible to you all? Yes, sir. System of laws, sir. Civil means who are civilians? Civil means what? Civil law, civil engineering, civil works. What does it mean, civil? House laws. Not house laws. Members of community are concerned. People's laws.
Simple, people's laws. Laws which are meant for common citizens. All civilians are criminals. Are we criminals? No, No, sir. sir. No. No, Okay. sir. But all criminals are civilians. Very interesting, Yes. no? All Yes, sir. civilians are criminals. But even criminals are civilians. They are the citizens. Okay. That's why laws were implemented for civilians and for criminals. But those laws, implementation was a problem. While implementing those laws, there was a biased laws. Foreign criminals were excused, British criminals and civilians were excused, whereas Indian criminals and Indian civilians were punished. This was the bias. Partiality was carried out. Partiality. Okay, so that was also one of the reasons. You see, Indians were not appointed to the post of judges. All judges were from what? England. Or all judges were of British. And most likely judgments were passed in favor of English. Indians were maximum punished. So people did not like these laws. People become very angry against the English system. That was the administrative reason. We discussed third cause. We discussed first cause, political cause. Second cause, economical cause. Third cause, we discussed what? Administration. Administrative reasons. Administrative cause. Mr. Sidraya, can you pronounce administrative? Spelling of administration. Mr. Baswana. Okay, next, military reasons. What were the military reasons? As I told you that in the military, there were 240,000 soldiers were there. 2 lakh Indians were there, 40,000 Britishers were there. But lot of partiality was done in the army of the East India Company. The facilities which were enjoyed by the British soldiers weren't given to the Indian soldiers. Promotions were restricted only to the Britishers. Maximum Indians were appointed as a coolie soldiers. What do you mean by coolie soldiers? Slaves. As a porter, I use word porter. They were appointed as porters, one who carry load. Their payments were very meager, very mediocre, through which they cannot fulfill their basic requirements. Whenever there was a war, Indians were asked to face on front rung of the line, army, that Indians were forced to face. Indian soldiers were forced to cross oceans, which were all against the Hindu traditions, Indian culture. So that's why that was an anger message. Once the Britishers introduced new rifle called Royal Enfield rifle, and that Royal Enfield rifle was greased of fats of cows and pig. As pig is blasphemous for Muslims and cow is sacred animal for Hindus. So they began to muddle, M-E-D-D-L-E, muddle means to disturb. So here East India Company or the Britishers began to involve, began to disturb in the matters of religion. All those cartridges of Enfield rifle were greased of fats of cow and pigs.
cartridges which were greased of cow fat was given to Hindus. Cartridges which were greased of pig fats were given to Muslims. Both of them rejected to use those. That's why the revolution began in. One of the Orthodox Brahmin called Mangal Pandey, he was soldier. He came out of the line. First, he refused to use the Royal Enfield rifle, and Britishers were angered, and he was stripped off. Mr. Varun Kumar, can you tell me what is stripped off? Do you know? STRIPPED, stripped off. Don't know, sir. And all soldiers were stripped off and they forced to march. What does it mean? Vishwanath Billu? Vishwanath? Yes, sir. You can't talk. Yes, sir. Stripped off. Surjan Badiwalar. Stripped off means they were asked to remove their clothes, uniform. On banyan and underwear, they were asked to march. That was a punishment given to them, soldiers. Got it? So, angered by this, Mangal Pandey came out of the what you call that marching parade. He took one gun and shot British officer at Barakpur. From this, the revolution began. That was the immediate cause of the revolt of 1857. What was the immediate cause of the revolt? That Mangal Pandey came out of the parade and he took gun and he shot British officer. Later on, he was apprehended, he was caught and put in jail, and afterwards he was hanged to death. Okay, so here, few military reasons I gave you. Then let us see how the mutiny was beginning, how the revolution was beginning. So the large number of Indian army gave confidence that they will be able to fight against the East India Company, but they underestimated the power of East India Company. East India Company was everywhere. East India Company was there in Egypt. East India Company was there in what you call that in China. East India Company was there in Bangladesh. That is in Indonesia. Everywhere they had their colonies. East India Company was there in Burma. East India Company, by that time, they were using telegraph, which was completely new thing for Indian. That today we are using mobile phones, but English in those time, English were using telegraphic language, which was unknown to Indians. This revolution was very easily tackled and very easily suppressed because English were well armed, English were well informed. Mere strength cannot. Now, ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ ಏನದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Without plans, you go fail. Okay, you will be failed. Your plans, if you want to get success, you should have a very sound plan. Okay, so that's why here, as I told you that the immediate cause of the revolt was those cartridges which were greased of fats of cows and pigs. And what happened? Mangal Pandey shot one of the British officer, and that led to the revolution. Then this revolution spread to Meerut, spread of mutiny, Meerut. So Meerut was the main center of this revolution. Okay, then they attacked garage of the Britishers
and they fetched firefield. Many soldiers were arrested and they were put in jail. And regions of the East India Company, they were filled in with the soldiers. Here one thing, common people weren't involved in this revolt. Only soldiers were there. Okay. Then at the Kanpur, Nana Sahib led the revolt. Nana Sahib. Tata Tope assisted Nana Sahib. And at God, that is Madhya Pradesh, that is Jhansi, Rani Lakshmi Bai revolted against Britishers. And this revolution spread to Lucknow. Begum Hazrat Mahal, she revolted against, at Lucknow, Begum Hazrat Mahal, she revolted against English. So in this way, among all these mutineers, among all these revolutionaries, Rani Lakshmibai was very brave queen. She fought in the battlefield and ultimately she was killed. After her death, her assistant, that is Tata Tope, he continued war. Later on, he was also apprehended and hanged to death. And in the Lucknow, Begum Hazrat Mahal fled. She took shelter in different country. In this way, the revolution was suppressed. And our own people like Sikhs, they were supporting to the English. That's why this revolution was proved to be failed. This revolution was failed. It may be of 3 marks, or you may be asked to write 4 marks question. Write the reasons for the failure of the revolt. Why it was failed. Okay. There are various reasons, not 1, 2, 3. Various reasons are there. First, it did not spread to entire country. Even not in North India. Even in North India, it wasn't spread. In North India also, it was limited only to Lucknow, Meerut, etc. Kanpur, very few pockets were there. So, this revolution was mainly erupted because of the rights of the soldiers, not the rights of the people. This revolution wasn't erupted again to free India from the clutches of the British, but this revolution was spread to fulfill the demands of soldiers who were working in East India Company. It was not national issue. It was the issue of soldiers. Is it right? Common people were involved. You take the example of Mahatma Gandhi. Was he a common man or was he a king of any province? So he was common man. He was No. common man, sir. You was take the common example man. of Subhash Chandra Bose. Was he the king of any province or common man? Common Common man. man, sir. Common man, sir. No. If it was a national issue, common people, poor people, rich people, kings, queens, everybody would have participated in that battle, in that struggle. But unfortunately, it was not the national movement. It was the movement of Sipahis. That's why Britishers were called it Sipahi mutiny. They don't call it as a revolution. So one more thing, Britishers were united and well informed, whereas our people were dispersed, divided. They weren't having one aim, one objective. Soldiers were fighting for their demands, to fulfill their demands. And common people were busy in looting other people. Even soldiers themselves began to loot other people. And they weren't a leader. They weren't having leader, one leader, single leader. Everyone was leader.
Rani Lakshmi Bai was leader. Queen, that is Queen Hazrat Begum Mahal, Hazrat Mahal Begum, she was leader. Tatya Tope was leader, and there was a division between these leaders. They were not cooperating each other. Okay, then the unity among the British and the disunity among the Indian soldiers resulted in the failure. The mutiny lacked direction and leadership. Why are we fighting? Either we are fighting to liberate our country, to free our country, or we are fighting to get our rights, get our payments. It was not clear. Direction was not clear. Soldiers were lacked discipline and skills, whereas English people, Britishers were well disciplined and well organized. They were using modern technology. The Indian soldiers lacked military strategies, military plans weren't there. And the freedom fighters lacked the definite aim. Aim was not one. And many of our own kings, they were supporting English people. For example, Sikh community, they were helping to the English. Even soldiers themselves were involved themselves in looting and fighting with our own common people. They looted Delhi treasury. That's why this report was failed. It may be a 4-mark question that it may be asked to you. You have to write. Anyhow, though it was failed, but it benefited lot in many ways to Indians. How was it benefited? First of all, East India Company was limited as only trading company. Indian administration was completely shifted to England. Queen took over the administration of India. For the first time, Indians were asked to participate in lawmaking. Queen assured Indians that only with the will and only with the happiness of the Indians, India will be ruled. Indians were given assurance that Britishers don't involve in the religious matters of Indians. Indians will be allowed to follow their own interest of religion. And for the development of Indian education, or Indian people's education, Queen agreed to spend money every year. All these were benefits in the benefit of a common people. That was the benefit. That's why this agreement was signed between not what you call East India Company, but Indian people and the Queen. That's why it was called Indian Magna Carta, because many policies were in the favor of Indians. That's why it is called Indian Magna Carta. Okay, let us see. So in the year 1858, Indian administration was taken over by who was taken? Adil Shah Bijapur, Surjan Madiwala. Who took Indian administration in their hands? It was shifted. Elizabeth. Yes. Abdesh. Yes, sir. Indian administration was shifted to where? Queen Elizabeth. Elizabeth took on the administration of India. Earlier, who were ruling? East India Company, sir. Very good boy. What was the period? It is a question to Bhakti. What was the period of East India Company's rule? Before 1857, sir. Hey, idiot, are you Bhakti?
Abdesh. Hey, Mr. Abdesh, Yes, sir. are you Bhakti? No, sir. Then why do you answer? मैं नहीं सुना सर किसे पूछेगा को. Mr. Lallu Panju? Yes, Bhakti. East India Company's rule. Yes, sir. East India Company's rule. Yes. Padmaja. East India Company's rule. East India Company's rule. Vivek Aksar. Pradnya. The period of East India Company. Yes. Can I, sir? Abdesh, you tell me. Till 1857, sir. From which period to which period? From which year to which year? 1613, sir. From 1613 to 1857, East India's Company's rule. After that, who ruled? Yeah. Queen Elizabeth, sir. Very good boy. From 1858 to last 1950. 1947. very good boy. 15th of August 1947. Till that date, English government's rule, that is British Parliament ruled, Queen ruled from 1858 to 15th of August 1947. So these were the agreements that were signed between Indians and the Queen. What was that? The agreement entered by the company with the local kings were accepted. Company had signed many agreements with common people. The demands of common people were accepted. First one, non-pursuance of regional expansion. Regional expansion cannot be expanded. Then providing a stable government for Indians. Now, after 1858, Indians will be given what we call a very stable government. Then equality before law. Law will be equally applicable to all. Either he may be a British or non-British. Non-interference of government in religious issues of Indians and practicing religious tolerance. Indians are assured that, Indians are given assurances that British government won't disturb in the religious matters of Indians. These freedoms were given to India. So British realized that unless they don't win the confidence of Indians, it is very difficult for them to remain in India for long period. That's why they felt it is necessary to involve Indians in administration. That's why consecutively various laws and various acts were passed, and in those laws and acts, Indians were given importance and Indians were involved in administration. And this policy is called policy of association. This policy was called policy of association. What was the policy of association? Indians should be involved in administration. Do you understand, Mr. Abdesh Pal? Are you Mr. Switch on, switch off? Yes, sir. Mr. Switch on, switch off. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಿ.
Policy of association ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ? Sir, it is the process of legislation, sir. Indians were allowed to participate in administration. They were allowed to form rules and regulations or legislations. That is called association. The term association means contact, involvement. Got it? But this revolt laid the foundation for the future struggle. Though the revolt was failed, but it brought many benefits to Indians. Got it? Okay. Let us see. Abdesh, you did first fill in the blank. The Mutiny of 1857 was called as dashed by the British historians. Yen tappadadu. Can I, sir? That should be revolt. Hedre, what should be the answer? Sepoy of Mutiny, Sipahi sir. mutiny, sir. Sipahi mutiny, that should be the answer. We can write Sipahi. The policy implemented by Dalhousie is Doctrine of lapse. doctrine of lapse. Not, that is doctrine, not doctor, doctrine, doctrine. Doctrine of lapse. Doctrine of Doctrine. Doctrine of lapse. Mangal Pandey. Yes, Bhakti. Yes. Third one. During the mutiny of 1857, Mangal Pandey killed the British officer. Mangal Pandey killed whom? British officer. Don't write Varun Kumar, don't write Aditya Arjungi. All these nonsense students. Yes. They are bed bugs, they are termites. Mr. Aditya Arjungi. Aditya Arjungi, are you termite? Next, Srushti. Yes, sir. Jhansi Rani took over Gwalior from the British during her war against them. What should be the answer? Gwalior, sir. Gwalior. Yes, sir. Right, Gwalior. Next question. Badiwalar. Yes, sir. What were the results of doctrine of lapse discussed? Yes. Sir, can I? Can I, sir? Can I, sir? Nandini. Can I, sir? Nandini can answer. Yes, sir. Due to the doctrine of lapse implemented by the British, Hey, that many is not Indian doctor. the doctrine, sir. Don't tell Dr. Bilal. Oh, sir, I have said doctrine, sir. Doctrine. Yes, sir. Doctrine means what? Principle. Yes, sir. Not principal. Principle. PLE. Principle. Doctrine.
Many Indian kings had lost their kingdoms. As a result of this policy, Satara, Jaipur, Jhansi, Udaipur, and many other states became part of British Empire. Nalaus abolished the kingships of Tanjavur and Carnatic Nawabs. The British dethroned Mughal kings and many other kings. As a result, many soldiers depending on these kings became unemployed. This became the main reason for the protest against the British. Completed. Very good. Very good. Next question. Next question, Bilur. Mr. Bilur. Yes, sir. Hmm. How Oh, did next the question. policies result in the mutiny of 1857? Explain. Huh. Answer it. Yes. Switch on your camera, mister. Vishwanath, being Due such a handsome bit boy, of Indra, such a handsome boy, if you switched off means what? Do you fear that any girl may send you the proposal of marriage? Huh? No, no, yes, handsome can lagte hai. Huh? Very good boy. Read. Read. Causes. due to the development of industrialization in England, the Indian handicrafts and industries diminished. England, apart from beginning an industrialized country, became a workshop of industries. The artisans of India became unemployed. The weavers became the first victim as the cloth making industries suffered a lot. The Indian handicraft became financially pathetic. The British levied high custom on Indian goods entering the market of Levied. The British levied. Hmm. due, due to zamindari system. The farmers were exploited by zamindars. Land tax collection rights awarded to talukas were withdrawn Okay, all these by points you have to write down. performing. Next question. So can I? Aditya. Aditya Arjun ki. Aditya Arjun ki is not talking to me. Those who are not answering, those who are not responding, their internal marks will be limited only to 8. Aditya, yes. So can I? Who are you? I don't know your names. Let Sania answer this. Yes, this 100 gram Sania. Yes. Sania, Harshit Dayama, are you there? Harshit, Harshit Dayama. You have switched off both camera and mic. Harshit Dayama, you are sure to lose your internal marks. Yeah, Shah. They are not answering me. Muttu,
Chalwadi, Yes, sir. can you answer this? Read next question and answer. What were the issues that outraged the religion's feeling of the soldiers? Very good boy. Once again, you read that question with confidence. Yes. Mr. Muttu, Yes, sir. once again, you read that question with confidence and read that answer. Hey, why have you muted yourself? Padmaja? She can't answer. Ask me, Pradnya Papu. Yes, sir. Can you answer that question? What were the issues that outrage the religious feelings of the soldiers? Yes, sir. Ah, The soldiers in the British Army were being given new rifles called Enfield. The cartridges used in the rifles were graced with that fat cow and pig. The soldiers had to pull the safety catch with the help of their teeth, but it was impossible for both the Hindus and Muslim soldiers because cow was scared for the Hindus, while pig was scared Madhu. That is not scared. That is sacred. sorry sir, scared for Ah, Hindus, while pig was blasphemous for Muslims. The factors disturbed the religion sentiments for both religions. Another factor that disturbed the Hindus' religious sentiment was that the soldiers were forced to cross the oceans to serve on foreign land. very good, very good. Next question for Pooja. Okay, sir. You have to read that question first. Okay, sir. What are the immediate causes of First War of Indian independence? Answer. The British started providing Royal Enfield guns, a type of new and improved guns. A rumor spread that the bullets of these guns were smeared in the fat of pig and cow. The cow was cared for Hindus and pig That is was not scared. Everybody is reading that is scared. That is not scared means, do you know what is the meaning of scared? Yes, sir. ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದ? Sacred, sir. Sacred, sir. That should be sacred. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಹುಚ್ಚ ಮಾಸ್ತರ್ ಕಲ್ಸಾರ ನಿಮ್ಗಂತ ನನ್ ಬೈತಾರ ಅವ್ರ ಮಂದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರ. ಯಾರು ಕಲ್ಸಾರ ನಿಮ್ಗಂತಾರ, ಯಾರು ಕಲಸ್ಲಾಗ್ತಾರ ನಿಮ್ಗಂತ ಬೈತಾರ. ಫೀಸ್ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಕಲ್ಸೋರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈತಾರ. ನಿಮ್ಗಂತೂ ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ದಡ್ಡ ಅದ್ದೀವ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಸ್ತರ್ ಕಲ್ಸಾರ ನಾವು ಮತ್ ಯಾರು ಸಾಲಿ ಕಲ್ಸಾಕ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಬೈತಾರ. ಇದು ಬರೀ ಐತ್ರಿಪ್ಪ. That is sacred. What is that? sacred for Hindu and pig was prohibited for Muslims. Pooja, wait. Pooja, wait. You take Yes, first sir. punishment. You tell me 10 times sacred. Correctly. Sacred. With all effect, you have to tell me. Sacred. Yes, Pooja? Yes, sir. Switch on your camera first. Sacred. Yes, continue. Next. Yes. Have you read answer? Yes, sir. Okay, next question. Abdesh.
Sir, Yes, can sir. List out the reasons that led to failure of Mutni, sir. Yeah, what is that? Mutiny, not mutiny. Yes, sir. Are you achieving something, Mr. Abdesh? No, sir. Come on. List out reasons. The first war of independence failed due to various reasons, sir. It covered every part of India. It was mainly concentrated on the issues of the rights of kings and queens rather than liberation of the country. As it was not planned, sir, there was many unexpected result. The unity among the British and disunity among the Indian soldiers result in its failure, sir. The Mutiny lacked directions and leadership. The soldiers also lacked discipline and organization skills. The Indian soldiers lacked military strategies, planning capabilities, and soldiering skills. The freedom fighters lacked a definite aim. Very good, very good, very good, very good, very good. Sad Harshit and- Dayama. Harshit. Rohan Nuchi, that is. Rohan. Sir, can I say? Yes, sir. Rohan, read last question. Rohan. Mr. Rohan. Who will read last question? What time is running? Sir, Can I, sir? Can I, sir? Can I, sir? Sir, can I, sir? Can I? Sir, can I? Sir, can I? Sir, Sa- can I, sir? Sabia is there. Can I, sir? Yes. Can I, sir? Can I? What Yes, I pass on to Srishti. Srishti, last question. What were the main aspects? Yes, sir. What were the main aspects in the declaration of the British Queen? Very Answer: good. the agreement entered by the company with the local kings were accepted. Non-Puritians of religion. Pursuance. Yes, sir. Pursuance of regional expansion, providing a stable government for Indians, equality before the law, non-interference of the government in religious issues of Indians, and practicing religious tolerance. Very good. Students, all of you have been participated, except there are a few students, they are not very cooperative with me. They will be taught lesson. They will be taught lesson of internal marks of just 8. They will get it. And this list should be there with Nandini. Got it? You have to inform me. So when I will enter the marks, you have to remind me. That time I will enter 8 marks to these fellows. Do we have any difficulties? I think we have completed history. Haven't Yes, we? sir. Yes, sir. Tomorrow I shall begin what? I shall start. Geography last lesson, sir. I think India land geography. resource. How many lessons geography? Twice No, should be. Last 2 lesson left, sir. Yes, sir. Land resources, sir. Water resources and land resources. All sections are covered. Except geography, all sections are covered. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only 2 lessons are remained, sir. What are those? Water resources and land resources. Yes, sir. We shall complete it. After that, immediately we should switch on to the second part of your textbook. Yes, sir. Yes, Yes. How was our journey? Was it very smooth, very difficult? Was it very what you call It complex? was very smooth, sir. Was it very So it smooth was very or smooth. difficult for you all? No, sir, there was no any difficulty, sir. I think I have touched each and every word of the textbook, I think. Yes, sir. Yes, sir. I have clarified. Yes, sir.
Yes, sir. Are you satisfied? Are you happy? Yes. sir. Yes, sir. You have been given freedom. Whenever you are having difficulty, you can call us. You will get directions. Okay. Yes, Okay, sir. sir. Have a nice day, Can I sir. give call to Shivanshi madam, Radha madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes. You can Bye, use. sir. Good day. किसी पे Bye, लोग- Okay. Bye, sir. Good day. Bye, sir. Have a nice day. Bye. See you. Bye, sir. Have a nice लो, आते हैं। तुम्हारे आईडी से शूट करना पड़ता है तो पर्सन्स दिखाता है हाँ। हमारा आईडी से प्रेजेंट होता है जो बच्चों के साथ ही जोक करके बिहेव करके दिए आराम से लोग कर रहे हैं। हमारे ओन फ्लो में है ओके गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. कितने ज्वाइन हुए हैं? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. 37 participants are there. गुड, वेरी नाइस। बच्चों देखो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ तक कि आज की नारी विमान चालक भी बनी है और चांद पर भी जा चुकी है, अपनी उड़ान भर रही है ना? आपको सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अपना जो क्षेत्र जो है, अपना सभी क्षेत्रों में अपना स्थान जो है जमाया हुआ है उसने। इसके लिए यानी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यानी ये बहुत साहस की बात होती है। पुरुषों में बहुत ज्यादा जो है धैर्य और साहस रहता है। उसी के साथ चलना जो है बहुत ही अनोखी बात होती है। तो वैसे काम तो वो कर रही है महिला, उसके लिए धैर्य और साहस भी होनी चाहिए। ऐसे हम वर्तमान काल यानी आज के काल में ही नहीं देख सकते, इतिहास में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके और झांक सकते हैं। हमें महिला की साहस के उदाहरण कई सारे मिलेंगे वहां पे। तो उदाहरण में रानी चन्नम्मा जैसे, और झांसी रानी, अब्बक्का देवी, और इंदिरा गांधी ले सकते हैं, कल्पना चावला ले सकते हैं, सुनीता विलियम्स ले सकते हैं, देविका रानी को ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है हमारे लिए उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण, यानी स्पष्ट दिखाई देने वाली जो है उदाहरण इनमें दिखाई देती। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पुराणों में बताया गया था, यानी पुराणों में बताया गया था। यहाँ पे देखो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु
न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलः क्रियाः। इसका मतलब जानते हैं आप बच्चों? देखिए यहाँ पे नो मैम। यत्र नार्यस्तु यानी संस्कृत में दिया गया है, मनुस्मृति में दिया गया है। मनुस्मृति मतलब हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। यहाँ पे उपदेश दिया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है, इसमें बताया गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रत्राफलः क्रियाः। इसका अर्थ होता है जिस समाज में स्त्रियों का आदर अथवा पूजा या प्रतिष्ठा होती है उससे देवता प्रसन्न रहते हैं, अर्थात सर्वत्र सुख और शांति रहती है। देखो यहाँ पे घर में कोई माँ हो या बहन हो या पत्नी हो, जो कोई भी हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा यानी उनको आदर से देखना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, घर में शांति बनी रहती है, वो भी खुश रहती है, हम भी खुश रहते हैं। ठीक है। जहां पर जिस समाज में स्त्रियों का अपमान होता है या वे दुखी रहती हैं, वहां सभी कार्य जो है असफल हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है यत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फलम क्रिया। इसका मतलब है जिस समाज में उसका अपमान किया जाता है, यानी यहाँ पे स्त्रियों का अपमान किया जाता है या नारी का अपमान किया जाता है, वो वातावरण जो है दुखी हो जाता है या असफल हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको बच्चों? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए इससे हमें पता चलता है, यानी अभी मैंने नारी के बारे में बताया या महिला के बारे में बताया, इससे हमें पता चलता है कि नारी भी क्षमता में पुरुष से कम नहीं है, पीछे नहीं है। जैसे वो क्या कर रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या कर रही है, काम कर रही है ना। इसलिए कहा जाता है कि वो पुरुषों से पीछे नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रोत्साहन की, घर में प्रोत्साहन देना जरूरी है। ऐसे ही पाठ आपके लिए है महिला की साहस गाथा, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में है, एक पाठ रखा गया है, उसका नाम है महिला की साहस गाथा, है ना? आपकी किताब में है ना, पेज नंबर कितना है? 113 से। यस मैम। ठीक है। इनका जन्म हुआ था, ये साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन असाधारण साधना करके सबको विस्मित कर दिया, आश्चर्य कर दिया। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिजेंद्र पाल को मिलता है, गौरव प्राप्त जो है मिलता है। वैसे तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला है वो जुंकेता भी है, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ये जापान के रहने वाली है। लेकिन भारत में जो पहली महिला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, उनका नाम है बिजेंद्र पाल। ठीक है, बिजेंद्र पाल। उनका जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव भी या श्रेय भी उनको दिया गया है। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, आज पाठ लेंगे। सबसे पहले जो है इसकी रीति, यानी इस पाठ की ढंग जो है इस तरह दिया गया है, किसी व्यक्ति के जीवन जुड़ी घटनाओं का परिचय, यानी उससे पता चलता है। इसका मतलब आप जान सकते हैं या देख सकते हैं, इसका उद्देश्य ये है, पाठ का आशय ये है, साहस, गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं इससे। इसके साथ हिमालय ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों से कम नहीं है, जान सकते हैं। समझ में आ रही है ना? महिलाओं के प्रेरणा जो
प्रेरणादायक जो पाठ है आपके लिए प्रेरणादायक, ऐसे ही ईमानदारों के सम्मेलन में भी बताया गया था कि ईमानदारों के आने से उदीयमान ईमानदारों को या ईमानदारों के लिए वो प्रेरणादायक था। वैसे ही महिला की साहस गाथा, जो गाथा का मतलब है कथा, कथा यानी कहानी, इसका जो आपको इस पाठ का रखने की वजह यह है कि आप भी जितने सारे जो बच्चे हैं वो क्या है यहाँ पे लड़कियां हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही ये उत्तम पाठ है। उनके जैसे आपको भी बनना है, हमें भी क्या करना है, उनके जैसे आगे बढ़ना है, अपना नाम कमाना है, या अपने लिए या खुद के लिए या अपने माता पिता के लिए क्या करना है, अपना नाम कमाना है और उनको भी प्रसन्न करना है, हम भी प्रसन्न हो जाएं। इस तरह उन्होंने क्या किया है, इस उद्देश्य के साथ यह पाठ रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे परिचय देते हुए व्यक्ति के जीवन की किसी अपूर्व साधना का परिचय ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे महिला की साहस गाथा पाठ को ले लेंगे। इस पाठ का उद्देश्य यह है, उद्देश्य यहाँ पे कहा गया है, इस समाज में पहले स्त्री पुरुषों या असमान स्त्री पुरुषों में जो असमानता है, यहाँ पे देखिए हर समाज में स्त्री को अलग क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, पुरुषों के लिए अलग। लड़कों को पढ़ने के लिए क्या देते हैं, अब आज के जमाने में है ना, अभी ये जो है ये गया है, लेकिन पहले के जमाने में जो है, पहले के जमाने में हमसे पहले जो है स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनसे पढ़ाना यानी पैसा खर्च करना ऐसे समझा जाता था। लेकिन आज भी अभी भी ये क्या है, कुछ लोगों में ऐसी विचारधाराएं है कि क्या करना है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कों को पढ़ाना है। ऐसे विचारों को भगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को क्या करना है, पढ़ाने से पूरा संसार जो है, पूरा संसार या घर में जो है ज्ञानता बढ़ती है, ऐसे विचारधाराएं हैं। तो विजेंद्र पाल को इस विचारधारा से हम क्या करेंगे, आगे लेके क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे चले आज पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में देखिए सारांश यहाँ पे पाठ का जो सारांश है मैं बताने जा रही हूँ। इस पाठ में स्वयं विजेंद्र पाल अपने जीवन के साहस की घटना का अपने शब्दों में वर्णन किया है। विजेंद्र पाल का परिचय देते हुए कहा गया है, अपना परिचय खुद देते हुए उन्होंने कहा है कि विजेंद्री भारत की वह महिला है जिसने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का गौरव भी प्राप्त उनको है। विजेंद्री के पिता का नाम था किशनपाल सिंह और माता का नाम है हंसा देवी नेगी। इनका जन्म जो है 24 मई 1954 में हुआ था, उत्तराखंड के नकुरी गांव में। ठीक है, इनका जन्म जो है एक साधारण परिवार में हुआ था 24 मई 1954 में उत्तराखंड के नकुरी गांव में। ठीक है, इनके पिता का नाम है किशनपाल सिंह और माता का नाम है हंसा देवी नेगी। इनके 5 संतानों में से एक तीसरी थी। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना? यस मैम। आप हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जहां पर आपको समझ में नहीं आता वो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए चौथी बार है मैं जो ये पाठ सुनाने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ, चौथी बार है। तो फिर भी यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किशनपाल सिंह उनके पिता का नाम है, माता का नाम जो है हंसा देवी नेगी है। इनके 5 संतानों में से ये तीसरी थी। इनके बड़े भाई को जो है पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था।
भाई को देखकर इन्हें भी लगा कि मुझे भी कुछ कर दिखाना है, समाज में मुझे भी क्या करना है, मेरा नाम भी कमाना है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, पहाड़ पर चढ़ने का शौक उनमें भी पैदा हुआ। उन्होंने निश्चय किया मुझे भी पर्वत पर चढ़ना है और अपने भाई से बेहतर करके भी दिखाना है। वैसे ही उनके पिता जो है उनको प्रोत्साहन दिया। जहां तक जो प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़शाला तक उनको पढ़ाया गया, लेकिन जो आगे का जो शिक्षण था उसके लिए वो मना कर रहे थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, यानी विजेंद्र पाल ने क्या किया, अपने प्रोफेसर के साथ बातचीत की और अपने पिता को क्या किया, समझाने के लिए कहा। और वहां पे प्रिंसिपल का या प्राध्यापकों का बहुत मर्यादा किया जाता है या गौरव दिया जाता है वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, विजेंद्र पाल को पढ़ाने के लिए कहा। तो उसी तरह किशन पाल सिंह जी ने उनको पढ़ने के लिए मौका भी दिया। ठीक है, ये जो है अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रारंभिक शिक्षा हो या अपने शिक्षण को प्राप्त करने के लिए ये 5 किलोमीटर तक पैदल स्कूल जाती थी। ये जो है पैदल जाना और स्कूल को आना जाना जो है बहुत उनके लिए फायदामंद हो गया। पर्वतारोहण प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग लेने में ये बहुत फायदामंद हो गया। प्रशिक्षण लेना पड़ा तब उनको बचपन में किया गया ये जो आना जाना स्कूल में आना जाना जो है 5 किलोमीटर तक जो आना जाने का जो कार्य जो है ये बहुत फायदेमंद हुआ। ये कठोर परिश्रम काम आया कह सकते हैं। पर उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों के कपड़े सीकर पैसे जुटाने पड़ते थे। ठीक है, अपने पिता का जो साधारण फैमिली के रहने वाले थे तो पढ़ाई के लिए इतना कर्ज तो उठाना उनके लिए ये नहीं था। पिता भी पढ़ने के लिए मना कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, मैं खुद क्या करूंगी, सिलाई बुनाई करके मैं क्या करूंगी, अपने पैसे जमा कर लूंगी और शिक्षण प्राप्त कर लूंगी, ऐसे अपने पिताजी से समझाया। और उसी तरह उन्होंने क्या किया, दूसरों के कपड़े सीकर पैसे जुटाने में लगे। ऐसे ही कठिन परिश्रम से उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीए हो गया और संस्कृत में एमए भी उन्होंने की और उसी में स्नातक जो है बीएड उन्होंने की, शिक्षा प्राप्त की। वे कहती है कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने पर्वतारोहण के लक्ष्य को भी कभी नहीं भूला। देखिए यहाँ पे वो कहती हैं पर्वतारोहण लक्ष्य यानी पढ़ाई के साथ साथ वो क्या करना चाहती है, यहाँ पे एवरेस्ट शिखर जो है चढ़ने के लिए वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है। तो वो उसका काम जो है उसके साथ साथ यानी पढ़ाई के साथ साथ ये ट्रेनिंग लेने के लिए भी शुरू कर दी। इसी बीच अपनी शिक्षा के साथ साथ कालानाग पर्वत की चढ़ाई की उन्होंने। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर 6672, देखिए यहाँ पे आपकी किताब में है, कालानाग पर्वत जो है 1922 में उन्होंने चढ़ाई की। तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर गंगोत्री जो है, ग्लेशियर का मतलब जो है यहाँ पे है, ग्लेशियर यानी हिम नदी कह सकते हैं, बर्फ का पहाड़ कह सकते हैं, वो वहां पे चढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो वो जो है 6672 मीटर है यानी 21,900 फीट जो है ऊंचाई है वो उसका। रूट गेरो जो है 5,819 मीटर है। उसको फीट में देखा जाए, फुट में देखा जाए 1991 फुट है। आपको सुनाई दे रही है बच्चों? हाँ मैम। ठीक है मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए
चढ़ाई की, जिसमें उनमें जो दोनों में इन्हें पहले काला नाग उन्होंने चढ़ाई की, बाद में गंगोत्री ग्लेशियर जी की चढ़ाई की, बाद में रूड गेरो, यानी थोड़े थोड़े करके उन्होंने क्या की, चढ़ाई करते करते उनके आत्मविश्वास जो है और भी बढ़ता गया। फिर अगले वर्ष जो है यहाँ पर, यानी जब दिल्ली में इस ट्रेनिंग लेते लेते उन्होंने क्या किया, ऐसे ही लेती गई, ट्रेनिंग लेती गई, और जब 1983 में, अगस्त 1983 में जब दिल्ली में विश्व हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हो रहा था, तभी वहां पे जो आए हुए थे तेंजिंग नोर्गे और जुंके ताबी वहां पे आए हुए थे। ये जो है पहली महिला है तेंजिंग नोर्गे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष हैं। जुंके ताबी जो है पहली चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ये जापान के रहने वाले हैं। इनसे प्रेरणा लेने के लिए या इनके भाषण सुनने के लिए बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन इन दोनों से वहां मिली, यानी विश्व हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हो रहा था जहां पर दिल्ली में, तो वहां उनको मिलने के लिए गई, तो उसको इतनी क्यूरियोसिटी थी, तो उनके लिए मिलने के लिए गई, दिल्ली मिलने के लिए गई और उनसे मिली, उनसे बातचीत की, और उनसे प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया कि उनकी तरह पर्वत पर यानी एवरेस्ट पर मुझे भी चढ़ना ही है। ठीक है, मैं चढ़ूंगी भी और एवरेस्ट पर चढ़ेगी, उनकी तरह पर्वत पर या एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। इस तरह उन्होंने निर्णय लिया, निश्चय किया और निर्धार करके वो और भी ट्रेनिंग लेने के लिए शुरू कर दी। और वे कहती हैं, आगे के पैराग्राफ में कहती हैं कि उनके जीवन में वो दिन भी बहुत जल्द आया, यानी 23 मई 1984 की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाती है। देखिए आप यहाँ पे, उन्होंने जब वो एवरेस्ट शिखर पहुंची, तो वो तारीख है 23 मई 1984। ये जो अक्षर जो है सुनहरे अक्षर, ये जो तारीख जो है सुनहरे अक्षरों से क्या दिया नाम, सुनहरे अक्षरों से क्या करते हैं, हम लिखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का श्रेय भी इस तारीख को ही उनको मिला है। ठीक है, इतना कहने के बाद विजेंद्र पाल अपनी पर्वतारोहण यात्रा को भारत की जो है इतना कहने के बाद विजेंद्र पाल अपनी पर्वतारोहण यात्रा को विस्तार रूप से बताती है। यहाँ पे वो शुरुआत साउथ पोल से करती है। साउथ पोल जो है एवरेस्ट और लाट नामक दो शिखर हैं, उसके बीच आती है ये साउथ पोल जो है। यहाँ पे सुनिए जरा सा, साउथ पोल जो है एक स्थान है, ये साउथ एवरेस्ट और लाट से नामक दो शिखरों के बीच में एक शिखर है, ये साउथ पोल, जो दुनिया में चौथे नंबर का ऊंचा शिखर है। ये नेपाल में स्थित इस शिखर से ही अक्सर एवरेस्ट चढ़ने वाला अपना यात्रा का आरंभ करते हैं। विजेंद्र कहती है, जब पर्वतारोहियों का दल साउथ पोल पर पहुंचे तो खुल्लर आप जानते हैं, खुल्लर जो है कर्नल है, यहाँ पे कर्नल जी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे 3 समूह दलों में से 2 समूह दल जो है दलों में बांटा, और वे कहती हैं, विजेंद्र कहती हैं, जब पर्वतारोहियों का दल साउथ पोल पर पहुंचे तो खुल्लर
ने इन 3 दलों को 2 समूह में बांटा। ठीक है, वे कहती है वे 4 बजे उठी और बर्फ को पिघलाया, चाय बनाई, चाय के साथ कुछ बिस्कुट और थोड़ा सा क्या किया उन्होंने, चॉकलेट नाश्ता करके अपने तंबू से यानी टेंट से बाहर निकली। एक और पर्वतारोही उनके साथ थे, उनका नाम था, क्या नाम था उनका, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, उनका नाम क्या था? अंगदोरजी। अंगदोरजी, ठीक है, वेरी गुड हर्षा, वेरी गुड। पर्वता 5:30 बजे वो बाहर निकले अपने तंबू से यानी टेंट से। जब वो बाहर निकली तो और एक पर्वतारोही थे, उनका नाम था अंगदोरजी। विजेंद्र के साथ चलने के लिए वे जो है आमंत्रित किए गए, वो भी तैयार हो गए, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वे कहती हैं मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्षमता, मैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए, देखिए एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी वहां पे जाना बहुत कठिन काम होता है। वहां पे जाना बहुत ज्यादातर क्या होती है, साहस वो उनमें भरना होता है या साहस उनमें होनी चाहिए। उनमें आत्मविश्वास था, कर्मठता, जो भी समस्याएं आती है वहां पे जाने में, तो उनसे फेस करने के लिए वो तैयार थी। जो भी आता है, जो ध्येयता, जो उनकी मंजिल या हम कह सकते हैं एवरेस्ट पर चढ़ना जो है उनका ध्येय था, वहां पे जो भी समस्याएं आएगी उसका फेस करने के लिए वो तैयार थी। उनमें पूरा विश्वास था मैं जरूर चढ़ूंगी और अपना जो मंजिल है मैं प्राप्त करूंगी। इस तरह विचार करके उन्होंने क्या किया, वो चढ़ने के लिए अंगदोरजी के साथ चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। वे आगे कहती है सुबह 6:20 साउथ पोल से निकले तो सूरज जो है निकल आया और धीमी धीमी हवा जो है चल रही थी। वहां पे देखिए वहां का जो वातावरण है उसके बारे में जो अंतिम संगति है, इति वृत्तांत, यहाँ पे कहा गया है इति वृत्तांत, आप देख सकते हैं पेज नंबर 114। इति वृत्तांत का मतलब है अंत संगति कह सकते हैं, जीवन में घटी घटनाएं कह सकते हैं, कह सकते हैं कोने संगति, लास्ट जो मूवमेंट है जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी, जब लास्ट मूवमेंट था उसके बारे में वो बता रही है यहाँ पे, जो आपके लिए प्रेरणादायक है, मोटिवेशन है आपके लिए। तो बताना चाहती है, वो आगे कहती है सुबह 6:20 पर अंगदोरजी और विजेंद्री साउथ पोल से निकले तो सूरज निकल आया था। सूरज जो है यानी दिन चढ़ आया था, सूरज ऊपर आ चुका था, धीमी धीमी हवा चल रही थी, ठंड हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी, अधिक ठंड थी। उन दोनों ने बिना रस्सी के वहां चढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको सुनाई दे रही है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। अंगदोरजी यस मैम। दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे, विजेंद्र पाल भी चल रही है और अंगदोरजी भी चल रहे हैं। यहाँ पे अंगदोरजी जो है एक निश्चित गति से चल रहे हैं, मिनिमम जो है स्पीड से चल रहे हैं। उनको पता है कैसे चलना है, आगे कैसे चलना है, इस ठंड में कैसे चला जाता है या कैसे हम कदम रख सकते हैं। इस तरह वो उनको गति जो है, जो कदम की जो गति है उनको पता है, वो निश्चित रूप से निश्चित गति से वो चल रहे हैं, न कम न ज्यादा करके वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
तो उसको देख के वो क्या कर रही है, कदम बढ़ा रही है उनके साथ चलने के लिए। विजेंद्र क्या कर रही है, उनके साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशान नहीं है, विजेंद्र उनके साथ चल रही है। विजेंद्र कहती है कि बर्फ जिन चट्टानों पर जमी थी वे सख्त और बुरबुरी अर्थात खड़ी खड़ी चट्टानें थी। देखिए यहाँ पे ऊपर जाते वक्त बहुत ठंड रहती है, बहुत बहुत जमी रहती है, आइस बहुत जमी रहती है, बर्फ बहुत जमी रहती है, कांच की तरह फैली रहती है। उसके लिए फावड़े की जरूरत रहती है और खुदाई की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है ना? रस्सी की जरूरत होती है और शूज की जरूरत होती है, ठंड न लगे ऐसे कपड़े रहते हैं, सभी की यानी ऑक्सीजन के लिए रेगुलेटर की जरूरत होती है। सभी सामान अपने कंधे पर उठा के चलना कोई आसान बात नहीं है। तो सभी लेके क्या कर रही है, अंग दोर्जी के साथ चल रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वे कहती है, पूरा हिंदी में बताने जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा भी यहाँ पे कन्नड़ नहीं है, तो जहां पर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है? ठीक है बच्चों? सृजन आपको समझ में आ रहा है ना? पिया यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, सृजन आपको भी समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आता आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है? यस मैम। देखिए यहाँ पे विजेंद्र कहती है, वहां पे जो बर्फ थी बहुत ही सख्त थी, शीशे जैसे पारदर्शी थी, यानी आईने की तरह फैली हुई थी। हमारी जो फेस है उसमें दिखाई देता था, वैसे भी जो बर्फ वहां पे बुरबुरी ऐस थी, यानी बर्फ थी, और हमारे जो फेस जो है वहां पे दिखने वाले ऐसे भी जो वहां पे बर्फ वहां पे फैली हुई थी, सख्त थी, काटने पर और तोड़ने पर, वहां पे काटने के लिए और तोड़ने के लिए वहां पे फावड़े का प्रयोग भी करना पड़ता था। केवल 2 घंटे के भीतर वे दोनों शिखर कैंप पहुंच गए थे। ये जहां पर जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप वहां पे रहता है ना, जहाँ पर स्टॉल रहता है ना, जहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्डा पर जाते वक्त आप कई सारे स्टॉल देख सकते हैं वहां पे, वैसे ही वहां पे स्टॉल यानी टेंट वहां पे रखा जाता है, जिसकी वहां पे सामान जरूरत होती है वहां पे दिया जाता है, टेंट में दिया जाता है। तो जो 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गए, अंगदोर्जी और विछेंद्री से जब पूछा, अंगदोर्जी जो है वहां पे बात करने का समय मिला, तो अंगदोर्जी जो है विजेंद्र पाल को पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो वो बोली, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुत आनंदित हो जाते हैं। कौन आनंदित हो जाते हैं उसकी बात सुनकर? अंगदोर्जी। अंगदोर्जी उनको पूछते हैं, यानी विजेंद्र पाल को पूछते हैं, क्या तुम थक गई हो? तो विजेंद्र कहती है, बिल्कुल नहीं। तो ये इस जवाब को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए अंगदोर्जी। विजेंद्र की क्षमता यहाँ पे दिखाई देती है, सामर्थ्य यानी कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाई देती है। विजेंद्र के इस उत्तर पर अंगदोर्जी बहुत खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कैंप में थोड़ा चाय वहां पे पीकर, थोड़ा सा रिलैक्स करके आगे की चढ़ाई के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। यहाँ से चढ़ाई में इन दोनों के साथ और एक आदमी जुड़ता है, उसका क्या नाम है बताओ जरा? लाटू। गुड हर्षा। लाटू का नाम है लाटू। पहले स्टेप में जो उन्होंने 5:30 बजे उठी, देखिए यहाँ पे 5:30 बजे उठकर
बर्फ पिघलाकर चाय और कुछ उसके बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और उसके साथ कुछ बिस्कुट खाई और थोड़ा सा चॉकलेट खा के चढ़ने के लिए तंबू से निकली और उसके साथ अंगदोर्जी भी थे। दोनों क्या किए, चढ़ती गई। पहला जो स्टेप है वहां पे वो रुकी और वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा आराम करके वहां से निकले। तो उनके साथ और एक व्यक्ति जुड़ता है, उसका नाम है लाटू। लाटू के बारे में ज्यादा हमको जानकारी यहाँ पे नहीं दिया जाता, पर विजेंद्र की बातों से ऐसा लगता है कि वो वहां का स्थानीय गाइड होगा। ठीक है, यानी रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, या चढ़ाई करते वक्त, एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त जो भी कठिनाइयां आती है उसके बारे में बताने वाला ये व्यक्ति जो है गाइड है। ठीक है, कैंप से जब ये तीनों निकलते हैं तो लाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर चलता है, क्योंकि आगे चलने में कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, ऐसे इसको समझकर क्या करता है, रस्सी लेकर वहां से चलता है। क्योंकि वह स्थानीय आदमी था, जानता था आगे रास्ता कितना दुर्गम है, कठिनाई आगे जो रास्ता जो है कठिन है, दुर्गम है, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में उसको पता था। इसलिए वो क्या क्या कर रहा है, वहां पे जो भी चीजों की जरूरत है वो लेने के लिए, वो लेकर क्या कर रहा है, उनके साथ चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब रस्सी का सहसा लेकर आगे चढ़ने लगे, तो विजेंद्र दोनों हाथों से रस्सी पकड़कर चढ़ रही थी। यहाँ पे आगे जो है कौन है, यहाँ पे अंगदोर्जी है, बीच में लाटू है, उनके पीछे जो है विजेंद्री पाल है। ये तीनों जो है एक निश्चित गति से चल रहे हैं। ठीक है, चढ़ते चढ़ते क्या कर रहे हैं, आगे चढ़ते हुए लाटू ने विजेंद्री पर गौर करता है, एक नजर मारता है, अर्थात ध्यान देता है, देखता है चढ़ते हुए विजेंद्री की सांस जो है फूलने लगी है। फूलने लगना यानी सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो है 1 मिनट में 4 लीटर के दर से होना चाहिए था। ನೋಡ್ರಿ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 मिनट में 4 लीटर के दर से होना चाहिए था। ठीक है, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। इसका अर्थ होता है यहाँ पे ऑक्सीजन ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ, 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ, ಹೌದಾ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಆಕಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಿಗೆ ನಡೆಯೋ ಹೊತ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಏರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ लाटू ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, लाटू ने क्या किया, यहाँ पे रेगुलेटर जो था वो उसने बढ़ाई, आपूर्ति की, उसकी जो 4 लीटर जरूरत थी उसको उन्होंने एडजस्ट किया। तो तभी उनको लगा हाँ सांस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ऐसे चलती गई जैसे अंगदोर्जी। ठीक है, रेगुलेटर को 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से सेट कर दिया लाटू ने। विजेंद्री वैसे ही उन्होंने कदम रखा जैसे अंगदोर्जी रखते हैं। उनको आसान लगने लगा, उनको चढ़ाई करने में बहुत
आसान लगने लगा। बेचेंद्र कहते हैं कि दक्षिण शिखर पर हवा की गति बढ़ गई और हवा के तेज झोंके जो है बर्फ के कण जो है उड़ रहे थे, जिससे आगे का रास्ता जो है दिखना कठिन हो रहा था। देखिए यहाँ पे दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, उसकी ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, हवा का झटका कह सकते हैं, हवा का एक तरफ का जो जोर मारता है झटका कहते हैं। बर्फ के कण जो है उसके मुख के तरफ उड़ रहे थे, तो वो कुछ भी वहां का दृश्य जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही क्या कर रही थी वो समस्या को हल करते हुए यानी फेस करते हुए क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। आगे जो है अंगदोजी है, बीच में लाटू है और पीछे जो है विचेंद्री पाल है। ठीक है, जिससे आगे का रास्ता दिखना कठिन हो रहा था। फिर विचेंद्री ने देखा कि अब मुझे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। नीचे की ओर देखा, मैंने बताया कि आप गोल गुंबद चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, 7 मंजिल खत्म हो जाते हैं। आगे जो है आप एक द्वार से अंदर जाते हैं और गैलरी में आप जाके आंखें बंद करके आप रुक जाते हैं वहां पे और एक बड़ी सांस लेते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? आप बता सकते हैं? आप गोल गुंबज में हैं अभी, आंखें बंद करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप गोल गुंबज में हैं। 7 मंजिल पार करके आप ऊपर गए हैं एक द्वार के द्वारा, तो आप गैलरी में खड़े हैं। तो गैलरी में खड़े रह के आप आंखें बंद कर खड़े हैं, तो आप नीचे देखते हैं। गैलरी में खड़े होके आप आंखें खोल के नीचे देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है बच्चों? हैं आप? अवधेश, सृजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಹೌದಾ? 7 ಮಂಜಿಲನ್ನ ದಾಟಿ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಹೋಗಿರಿ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾಕಲ್ದಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗ್ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಒಳಗ್ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅದ, ಒಳಗ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲದ, ಬಾಕಲ್ದಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? कमल जैसे पंखुड़ियां वहां पे बनाई गई हैं, वहां से आप जाते हैं अंदर, तो गैलरी में खड़े होते हैं। नीचे आप देखते हैं, गैलरी में खड़े होके आप नीचे देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? हर्षा, आप मेरी बात सुन रही हैं? मेरी आवाज सुन रही हैं? हमें लगता है कि हम बड़े ऊंचाई पर ठहरे हैं। खड़े हैं, ठहरे हैं नहीं, खड़े हैं। यस मैम। ठीक है, आपको कैसा लगता है वहां पे ऊंचाई? उतना जो ऊंचाई को देखकर आपको कैसा लगता है? डर लगता है ना? वैसे ही वो भी सहसा वैसे जो आपको जैसे लगता है वैसे ही उनको भी लगा। नीचे देखती है, वो घबरा जाती है, एकदम से घबरा जाती है नीचे। अब मुझे आगे चलना नहीं है, मैं एवरेस्ट पर खड़ी हो गई हूँ। नीचे वो देखती है, सहसा घबरा जाती है, मुझे आगे का जो है मैं, ठीक है, क्लियर तो नहीं होगा? Yes, ma'am. बरे Yes, नानी ma'am. बरे नानी हेळो हाग बर। हवा के तेज जो है वहां पे बर्फ के कणों को उड़ा रहे थे, जिससे आगे का रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर विचेंद्री ने देखा, जब और ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, नीचे की ओर देखा तो चारों तरफ जो है ढलान चट्टाने थी। यानी ढलान ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರಾದಂತ एकदम ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾರೋರು ಪೂರಾ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಂದಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾರೋರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ
ಎಲ್ಲಾ ತೆಳಗಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನುಗಳದಾವ ಶಿಖರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಎತ್ತೆತ್ರ ಇಳಿಜಾರಾದಂತಹ ಶಿಖರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ एकदम से एक बड़ी सी सांस लेती है, सांस लेकर रुक जाती है वहां पे। ऐसा उनको प्रतीत लगा कि वह सफलता को छूने वाली है, यानी छू चुकी है, सफलता जो है छू चुकी है। ठीक है, तो वो कहती हैं उनका सोचना यह सच भी साबित हुआ, सच भी साबित हुआ। वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी थी। वह तारीख थी 23 मई 1984 दोपहर 1:07। देखिए यहाँ पे वो जब पहुंची तब उस तारीख था 23 मई 1984 दोपहर 1:07। ये जो है प्रथम भारतीय महिला थी तब जो चढ़ने वाली, बहुत सारे हैं अभी, लेकिन जो श्रेय उनको मिलता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का श्रेय मिलता है वो है विजेंद्र पाल को। जब वो माउंट एवरेस्ट पहुंची या एवरेस्ट शिखर पहुंची तब आप उस तारीख का नाम बता सकते हैं? तारीख को बता सकता है कोई? कैन आई मैम? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07। 7 में वो क्या पहुंची, कहां पर पहुंची? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। हर्षा आप बता सकती हैं? हर्षा आप बता सकते हैं? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कौन खड़ी थी? विजेंद्र पाल खड़ी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना? उनके माता पिता का नाम बताओ पहले। उनके माता पिता का नाम बताओ। उनके पिता किशन पाल सिंह और माँ हंसा देही नेगी। हंसा देही नेगी और किशन पाल सिंह के कितने बच्चे थे? 5 में विजेंद्र पाल कितनी? विजेंद्र पाल तीसरी संतान थी। हाँ, इनका जन्म कब हुआ था? मैंने बताया अभी, इनका जन्म कब हुआ था? आप लिख सकते हैं, ऊपर किताब में लिख सकते हैं पेंसिल से। 1954 में 24 मई 1954 में। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए उनका साहस आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके जैसे आपको भी बनना है। ठीक है, ये मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायक एक लेसन है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 1:07 तक ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और विजेंद्र कहती हैं एवरेस्ट पर इतनी जगह नहीं थी कि वे और अंगदोर्जी दोनों खड़े रह सके। ठीक है, दोनों खड़े रहने के लिए वहां पे जगह नहीं थी। दोनों को खड़े रहने के लिए, अकेले को खड़े रहने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने साथ ले गई थी ना वो फावड़े से उन्होंने वहां पे जो बर्फ था, थोड़ी सी बर्फ को खदेड़ दिया, यानी थोड़ा सा कट करके वहां पे दोनों लोगों को खड़े रहने के लिए वहां पे जगह बनाई उन्होंने। और फावड़े थोड़े खदेड़ कर वहां दोनों लोगों के लिए जगह बनाकर वो क्या करती है, दोनों खड़े रहते हैं। विजेंद्र ने अपने घुटनों के बल पर वहां पे बैठ जाती है और हिमालय को, यानी हिम का जो पर्वत था उसको चूम लेती है, नमस्कार करती है। पहले अपने माथे से हिम के ऊपर अपना माथा टेकती है
और नमस्कार करती है, माथे से नमन करती है, एवरेस्ट शिखर को चूम लेती है, बिना उठे ही अपने थैले से दुर्गा माँ की मूर्ति को और हनुमान चालीसा निकालती है। तो अपने लिए लाई हुई जो लाल कपड़ा भी था उसमें वो लपेट कर छोटी सी पूजा करती है, थोड़ी सी खुदाई करके खदेड़ कर बर्फ को खदेड़ कर क्या करती है, उसमें गाड़ देती है। ठीक है, बचेंद्र पाल अपने साथ क्या क्या लेके गई थी? अवधेश? यस मैम। बिछेंद्र पाल अपने साथ क्या लेके गई थी? अभी अभी मैंने बताया। अवधेश आप कहाँ थे? अब तक कहाँ थे आप? बच्चों हैं आप? Yes, ma'am. हाँ, वो त्रिशा की ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು ಹೇಳ ನೋಡು. त्रिशा? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को किसने लिखा है? हर्षा, पूजा? यस मैम। हाँ, हनुमान चालीसा को किसने Yes, लिखा है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं बच्चों? मैडम तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, अब पढ़ाई कर रहे हैं ना? सृजन? हाँ मैडम। तुलसीदास लिता एलिद्दी पूजनी। ठीक है, मेरा समय अभी समाप्त होने आया है, समाप्त हो गया है। इसका जो कल लेसन इसके बारे में पढ़ेंगे और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? ओके मैडम। ठीक है, Okay, ma'am. Good day, ma'am. Bye, Have a ma'am. nice day. बाय बाय मैम। मैम। हैव अ नाइस डे मैम। अब तक मैंने आप जो भी सिखाया है उसके बारे में मैं प्रश्न निकालूंगी। कल इसके बारे में प्रश्न पूछकर ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस Yes, ma'am. ओके मैम। बाय मैम। बाय मैम। Bye, बाय ma'am. बाय बाय।